Welcome back, guys. I think much has been done about poetry section. We have covered almost 3 or 4 poems now. Now let us move towards prose section. Our first prose in book is a short story. In fact, American short story, which is named as After 20 Years by O. Henry. Henry's short story, After 20 Years, focuses on the reunion of two friends, Jimmy and Bob. So we can say we have 3 characters in this story, Jimmy, Wolf, Bob Acres, and a plainclothes man. Through their brief encounter, the two explore the theme of friendship, loyalty, and trust. O. Henry has set the story in New York City in the early part of 20th century. It is dark, cold, and streets are very deserted. In fact, in this story, there is discussed meeting of two old friends after 20 years. That causes the conflict of the story because Jimmy Wells is a new policeman while Bob has become Silky Bob, a criminal who is wanted in Chicago. So, dear students, this was the introduction of the poem, of the prose. You have got the idea कि दो friends हैं, Jimmy Wells and Bob, who had been living previously in New York City. The two friends departed from each other, separated from each other 20 years back. 20 साल पहले वो एक दूसरे से जुदा हो गए with a promise कि 20 साल के बाद वो same place पे, same time पे मिलेंगे. No doubt what their destiny would be. What would be their fate, जो उन्होंने कमाया होगा, उनकी किस्मत में जो भी लिखा होगा, लेकिन ये वादा कि वो मिलेंगे. And thereafter reunion happens. वो मिलते हैं, लेकिन वो कैसे मिलते हैं, कैसे पॉसिबल होता है, क्या चेंजेस आई होती हैं उन 20 सालों के बीच में, ये हम पढ़ेंगे. सो यहाँ पे बिट बाय बिट अगर मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश का बुक आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ब्रीफ में आई हैव प्रिपेयर्ड दिस समरी फॉर यू ऑफ दिस लेसन आफ्टर 20 years. आई विल रीड इट अलाउड. तो आप यहाँ से अपनी बुक अगर आपके सामने है तो आप जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको इजी भी कर सकते हैं. सो आई विल रीड द समरी अलाउड. ओके, I have book with me. The cop moves along the street looking strong and important. In the opening line हम क्या देखते हैं, एक policeman है, एक cop एक सिपाही है. In fact, as I have told you कि setting जो है न्यूयॉर्क सिटी में है और time is night time. सर्दी का वक्त होता है, सर्दी का सीजन होता है, मे बी दिसंबर और जनवरी. इट इज नाइट टाइम. और जिस एरिया की बात हो रही है जहाँ पे कॉप मूव कर रहा है वो कोई बिजनेस लोकेलिटी है. एरिया इज विसिनिटी इज बिजनेस लोकेलिटी जहाँ पे कॉप जो है ही इज मूविंग ऑन द बीट. ओके, ही मूव्ड अलोंग द स्ट्रीट looking strong and important. This was the way he always moved. He was not thinking of how he looked. There were few people on the street to see him. It was only about 10 at night, but it was cold. So कितने बजे थे? रात के 10 बजे थे. सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा लोग स्ट्रीट में नहीं दिख रहे थे because I have already told you कि ये जो एरिया था बिजनेस लोकेलिटी थी. ज़्यादातर ऑफिसेज या शॉप्स जो थे अर्ली नाइट या लेट इवनिंग में क्लोज हो जाते थे.
तो ये ज्यादा देर तक खुले नहीं रहते थे, इसलिए बहुत कम लोग थे. And there was a vent with a little rain in it. Wind with a little rain in it मतलब है, वहां पे आपकी बुक में वर्ड यूज किया गया है chilly gust of winds with a taste of rain. ठंडी हवा की झोंके. Okay. Next, he stopped. Now we are talking about cop. वो जा रहा है, खिड़की दरवाजे चेक कर रहा है, कोई है तो नहीं, कोई जरूरतमंद नहीं. जैसे हम कहते हैं चौकीदार रात को घूमता रहता है आपके घर की बाहर की गलियों में, इसी तरह से ये भी घूम रहा है. He stopped at doors as he walked along. Which door? All the doors. जितने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पे शॉप्स वगैरह है, उनको भी चेक कर रहा है. Trying each door to be sure that it was closed for the night, because it was his duty to check it. So he is checking. Now and then he turned and looked up and down the street. He was a fine-looking cop, watchful, guarding the peace. कभी कभी वो बीच बीच में इधर उधर भी देखता था, दाएं बाएं भी देखता था, जिसकी वजह से वो एक वॉचफुल कॉप लग रहा था. आपकी बुक में लिखा गया है trying doors as he went, twirling his club. Twirling word means moving his club. घुमाते हुए. क्लब क्या होता है? वो जो पुलिस वालों के हाथ में डंडा होता है. With many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. बीच बीच में सड़क की तरफ, रोड की तरफ भी देखता था, कुछ है तो नहीं, कोई आया तो नहीं है. It showed that he was too much cautious. The officer with his stalwart form and slight swagger. Stalwart form means strong body, and his proud gait, G-A-I-T, gait means tall. उसकी वजह से made a fine picture of the guardian of peace. Okay. People in this part of the city went home early. As I have already told you, ये वो इलाका था जहाँ पे ज्यादा बिजनेस फ्रैटर्निटी रहती थी या ऑफिसेज थे, शॉप्स वगैरह थी. तो इस एरिया में, ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं था ज्यादा, तो लोग इस एरिया में ज्यादा जल्दी घर चले जाते थे और डी पीपल होती थी, यानी कि लोग कम होते थे, स्ट्रीट्स डी पीपल होती थी. Now and then you might see the lights of a shop or a small restaurant. कहीं कहीं बीच में इक्का दुक्का रेस्टोरेंट्स की लाइट्स जलती थी. But most of the doors belonged to the business places that had been closed hours ago. Then the cop suddenly slowed his walk. Why? Near the door of a darkened shop, a man was standing. कॉप धीरे धीरे चलते हुए रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर पड़ी एक शॉप जहाँ पे अंधेरा था, वहां पे एक आदमी खड़ा था. As the cop walked towards him, the man spoke quickly. जो ही कॉप उसकी तरफ गया, उस आदमी ने बोला, It's all right, officer, he said. I'm waiting for a friend. 12 years ago, we agreed to meet here tonight. It sounds strange to you, doesn't it? I will explain if you want to be sure that everything is all right. About 20 years ago, there was a restaurant here where this shop stands. Big Chobrade's restaurant. In fact, 20 साल पहले, 20 years ago, जब ये दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से बिछड़े होते हैं, बिछड़ने से पहले एक जगह डिनर करते हैं, एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, और उस रेस्टोरेंट का नाम होता है बिग जो ब्राडीज रेस्टोरेंट. नाउ दिस टाइम व्हेन द कॉप वाज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, और उसने इस आदमी को देखा जो कि एक डॉक एंड शॉप के ऊपर खड़ा था. उसने उससे बोला, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, उस फ्रेंड का जिससे मिलने का वादा मैंने 20 इयर्स बाद किया हुआ है. आपको तो ये अजीब लगता होगा कि 20 साल के बाद आजकल कौन इंतजार कर रहा है, बट मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे रहा.
लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. Because at that time, at the time of separation of two friends, they had promised to meet each other at the same place where the restaurant stayed. उसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे. लेकिन अब वो रेस्टोरेंट नहीं था. तो ये पूछता वो रेस्टोरेंट का क्या हुआ? It was here until 5 years ago, said the cop. कॉप ने क्या बोला? It was here until 5 years ago. 5 साल पहले तक भी था. The man near the door had a colorless square face with bright eyes and little white mark near his right eye. He had a large jewel in his necktie. Who was now the man in the door? He was not in fact cop. In these lines, in the opening of story, we are having only two characters. One is cop and another is the man who is waiting for his friend in rather darkened shop. जो एक दुकान पे जहाँ पे लाइट नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, वहाँ पे खड़ा है, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है. एक वो आदमी और दूसरा कॉप. कॉप की नजर जब इस आदमी पर पड़ती है तो वो देखता है इसका फेस कैसा है? स्क्वायर, eyes are bright and little white mark near his right eye. और उसके अलावा बड़ा सा एक जीवल, कोई स्टोन वगैरह उसकी नेकटाई में भी है, जिससे पता चलता है he is probably rich. उसकी अमारत का पता चलता है. Now this person says to cop, as he had promised, first tell me about that restaurant and I will explain you everything. Now he is saying, 20 years ago tonight, said the man, I had dinner here with Jimmy Wells. He was my best friend and the best fellow in the world. He and I grew up together here in New York, like two brothers. I was 18 and Jimmy was 20. There are 20 साल पहले मैं और मेरा friend Jimmy Wells. It means the man who is standing near the shop. He is not Jimmy Wells, he is other than Jimmy Wells. और वो जिस दोस्त का वेट कर रहा है उस दोस्त का नाम Jimmy Wells है और इस बंदे का नाम probably कुछ और है. तो कह रहा है कि मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम यहाँ पे दोनों एक साथ पले बढ़े. मैं तब 18 साल का था और वो मुझसे 2 साल बड़ा था. The next morning I was to start for the West. He's saying that when we had dinner here, when we departed from each other, the next day of that I was to start for the West. I was going to find a job and make a great success because this person was ambitious. In fact, this person whose name is not known to us, probably this is Silky Bob, about whom O. Henry has talked in the beginning. So this is one of the friends, Bob. So he's saying, I was going to find a job and make a great success. This person was ambitious. वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था. He was not satisfied with his fortune in New York, so he moved to West. You couldn't have pulled Jimmy out of New York. But Jimmy के बारे में इसका क्या ख्याल है कि no force could drag Jimmy out of New York. वो कभी यहाँ जो अपनी जगह छोड़ के, जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी जगह छोड़ के कभी नहीं जा सकते. So he's saying about Jimmy कि वो भी अपनी जगह छोड़ के जाने वाला नहीं था. He thought it was the only place on earth. He's saying that Jimmy को ये लगता था कि दुनिया में बस यही एक जगह बची है. जैसे कुछ ऐसे लोग जो नहीं जाना चाहते वो कहते हैं अरे हमारी जगह से अच्छी कोई जगह है ही नहीं. So he's saying that you couldn't have pulled Jimmy out of New York. He thought it was the only place on the earth. Then he goes on saying, we agreed that night that we would meet here again in 20 years. We thought that in 20 years we would know what kind of man we were and what future waited for us. So, before they departed from each other, separated from each other that day, उससे पहले उन्हें ये प्रॉमिस किया कि 20 साल के बाद हम जब मिलेंगे, चाहे जो भी हम देखेंगे हमने अपनी जिंदगी में क्या खोया है, क्या पाया. Now, cop is saying, it sounds interesting, said the cop. बड़ा मजेदार है आपकी कहानी. A long time between meetings, it seems to me. मुझे तो लगता बड़ी देर हुई.
Have you heard from your friend since you went west? तुमने अपने फ्रेंड से कभी उसके बाद कांटेक्ट नहीं किया? कोई बात, कोई खैर खबर उसकी नहीं सुनी? Yes, for a while we did write to each other. We corresponded, said the man. जो दूसरा आदमी था, जो probably बॉब है, उसने कहा हाँ, हमने एक दूसरे से बात की कुछ अरसे के लिए. But after a year or two we stopped. They lost, in fact, each other's contact. The West is big. I moved around everywhere and I moved quickly. But I know that Jimmy will meet me here if he can. कहता बड़ी चॉइस है, बड़े ऑप्शंस हैं. दौलत की रेल पेल में मैं खो गया, कमाने में लग गया. I had to try my best to get my fortune or pile of wealth. So मैं सब पीछे भूल गया, लेकिन ये कभी नहीं भूला कि मैंने 20 साल के बाद अपने फ्रेंड से मिलना है. और आज मुझे पता है कि मेरा फ्रेंड जिमी मुझे जरूर मिलेगा, वो भी पूरी कोशिश में होगा. He was as true as any man in the world. Now he is talking about the faithfulness and loyalty of his friends. कि मेरा फ्रेंड कितना लॉयल है. He will never forget. I came 1,000 miles to stand here tonight. Not only he, this person also respects the friendship. He is also loyal towards his friend because he has crossed the distance of thousands of miles to meet his friend. But I will be glad about that if my old friend comes too. The man waiting took out a fine watch covered with small jewels. फिर घड़ी में टाइम दिखता है. 3 minutes before 10, he said. It was 10 that night when we said goodbye here at the restaurant tour. कहता अभी 10 बजने में 3 मिनट हैं. हम तो एग्जैक्टली 10 बजे एक दूसरे से बिछड़े थे, तो अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं. You are successful in the West, weren't you? asked the cop. उसने कहा आपको तो सक्सेस मिली ना. I surely was. I hope Jimmy has done half as well. He was a slow mover. I have had to fight for my success. अब ये बंदा इस आदमी को, इस कॉप को अपनी सारी स्टोरी बता रहा है. कह रहा हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जिमी ने भी काफी कुछ किया है. नो डाउट वो थोड़ा सा स्लो लर्नर या स्लो मूवर था. बहुत जल्दी जल्दी, उसे मेरी तरह बहुत जल्दी नहीं थी दौलत पाने की, लेकिन कुछ तो उसने भी किया होगा. आई हैव हैड टू फाइट फॉर माई सक्सेस. मैंने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए. इन न्यूयॉर्क अ मैन डजंट चेंज मच. लेकिन यहाँ पे न्यूयॉर्क में वेस्ट जैसा कंपटीशन नहीं है. इन द वेस्ट यू लर्न हाउ टू फाइट फॉर what you get. The cop took a step or two. I will go on my way, he said. I hope your friend comes all right. If he isn't here at 10, are you going to leave? अब इस कॉप ने, जो कि सामने था, इसने ये सारी कहानी सुनी कि वो बंदा अपने फ्रेंड जिमी वेल्स के बारे में बता रहा था. इसने कहा चलो मैं चलता हूँ. होप कि आपका फ्रेंड आए, वो आपसे मिले. अगर वो 10 बजे तक ना आया तो आप चले जाएंगे ना? I'm not, said the other. I will wait half an hour at least. कहता ना, मैं उसके लिए आधा घंटा और एक्स्ट्रा इंतजार करो. If Jimmy is alive on the earth, he will be here by that time. Good night, officer. Good night, said the cop and walked away, trying doors as he asked. There was now a cold rain falling and the wind was stronger. The few people walking along the street were hurrying, trying to keep warm. At the door of the shop stood the man who had come 1,000 miles to meet a friend. Such a meeting could not be certain, but he waited. ठंडी हवा चल रही थी. लोग फटाफट घरों को जा रहे थे. कोट कॉलर ऊपर चढ़ाए थे. बहुत सर्दी बढ़ती जा रही थी. ये पुलिस कॉप की दरवाजे चेक करते करते जा रहा था. लेकिन ये आदमी जो वेस्ट से अपने फ्रेंड जिमी वेल्स से मिलने आया था, ये कंटिन्यूअसली वेट करता रहा. So, viewers, much time has been used due to limited internet access. I cannot upload lengthy video. We will continue what happens to that man, whether his friend comes to meet him or not, in our next lecture. I have given you half summary. You read the summary and try to answer the questions that follow, comprehensive questions on your book.
और जितना आप यहाँ से करेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं जब तक हम पूरी समरी पढ़ते हैं. So lesson will be continued. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you.